Hello students, good morning you to all. आमे लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी थिले ना को कैरेक्टरिस्टिक्स रे आमे एनिमल किंगडम टी को डिस्क्राइब करिबा से विषय रे आमे डिस्कशन करूचे. आमे तारो हैबिटेट कौन, आमे तारो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन, आमे तारो जर्म लेयर कौन, तारो सिमेट्री कौन, तारो बॉडी प्लान कौन, ए विषय रे पढ़िले. ऑलरेडी सिलोम विषय रे भी आमे पढ़ीचे. से सिलोम विषय रे सेटा को आमे टिके कंटिन्यू करिबा. कौन पिला माने सिलोम आमे ऑलरेडी पढ़ीचे. इट इज द स्पेस, फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड योर एलिमेंटरी कैनाल and which is lined with the outer parietal peritoneum and inner visceral peritoneum. And what this coelom performs, what it functions, it anchors the, helps in anchoring the internal body organs. It also reduces friction. It also keep the surface of internal organ moist, etc. and etc. So on the basis of coelom, we classified the animal kingdom into acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. Acoelomate means the animals those not having the coelom, that is the example animals included in phylum Porifera, phylum Cnidaria, phylum Platyhelminthes. And the next pseudocoelom. Pseudocoelom means they have a false coelom. The body cavity is not lined with a mesodermal cell, that is a false coelom. And the animals included in phylum Nematohelminthes. And then eucoelom. True coelom, the annelids, they are the first eucoelomate animals. So the eucoelom again is of two types. Coelom, acoelomate, pseudocoelomate, eucoelomate. A means not, no coelom. Pseudo, false coelom. Eu, true coelom. No coelom, false coelom, true coelom. Coelomate, coelomate, coelomate. This is common. And acoelomate, your Porifera, Cnidaria and Platyhelminthes. Platyhelminthes. Your Nematohelminthes. Nematohelminthes. This is false coelom. And the animals, those are having true coelom, it is further subdivided into schizocoelom, schizocoelomate and enterocoelomate. Enterocoelomate. What is then schizocoelomate and enterocoelomate? Schizocoelomate means, pilamane, when the coelom is formed by the splitting of a mesoderm layer. Schizocoelom, this is ectoderm, this is endoderm,
So this is somatic mesoderm, mesoderm, and this is splanchnic mesoderm. Splanchnic mesoderm, and this is coelom. This is coelom. That means, and the type of coelom is called schizocoelom. The type of coelom is called schizocoelom. That means, when the mesoderm, the coelom is formed by the splitting of mesoderm layer. The mesoderm layer splits and one body cavity is formed. The mesoderm layer is splits. The mesoderm layer splits into the outer somatic mesoderm, and inner splanchnic mesoderm, and the space in between the somatic mesoderm and splanchnic mesoderm is called coelom, and that is it is lined with outer parietal peritoneum and inner visceral peritoneum. So when the coelom is formed by the splitting of mesoderm layer into outer somatic mesoderm and inner splanchnic mesoderm, the type of coelom is called schizocoelom. And who are the schizocoelomate animal? Annelida, Arthropoda, and mollusca. एमाने हेले schizocoelomate animal. Then what is enterocoelom? Enterocoelom hela pila mane when the coelom is formed from the pouch pinched up from endoderm. This is endoderm, and the pouch pinched up from endoderm, also called embryonic gut, also called archenteron, when forms coelom, that is called enterocoelom. It is the pouch pinched off from endoderm or archenteron or embryonic gut. So when the coelom is formed from the pouch pinched up from endoderm, ता माने ए जो पाउचटा परवर्ती पर्याय रे एबळी अछि ता कहबा enterocoelom. This is enterocoelom. So when the pouch pinched up from endoderm, when the archenteron, when the so-called embryonic gut forms the coelom is called enterocoelom. And when the coelom is formed by the splitting of mesoderm layer into somatic mesoderm and splanchnic mesoderm, it is called schizocoelom. And who are the schizocoelomate animal? Annelida, Arthropoda, mollusca. The animals included under 3 phyla. And who are the enterocoelom? They are echinodermata, hemichordata, and chordata. So, पिला माने आमे जो 12टा फाइलम करिचे फ्रॉम प्रोटोजोआ ठू धरिकरी आमे कोडाटा पर्यंत सेमानकु जदी पचरा जाए तुमको जे अरेंज डिफरेंट फाइला ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम, देन कौन से ना ए सीलोमेट हेले पोरीफेरा निडारिया प्लाटीहेलमिन्थेस, स्यूडोसीलोमेट हेले नेमाटेहेलमिन्थेस, स्किजोसीलोमेट हेले Annelida, Arthropoda, mollusca, enterocoelomate हेले echinodermata, hemichordata, and chordata. So this is the coelom. And another term
called hemocoel. Hemocoel means when the coelom is filled with blood. Coelom is filled with blood. That is called hemocoel. किए ना arthropoda and mollusca. Arthropoda and mollusca. Mollusca. This is hemocoel. So students, all this is about coelom. नेक्स्ट पिला माने जिबा cephalization. Cephalization. That is another characteristic. Cephalization. Cephalization term टी पिला माने केफाले शब्द रु उद्धृत. केफाले means head. Head. So cephalization means the development of a distinct head. Development of a distinct head ताको हमें कहिबा development of a distinct head at the anterior region. At the anterior region which possesses the major sense organ, organ of ingestion, It is called cephalization. That means जो मानकर गोटे निर्दिष्ट हेड बोली गोटे पार्ट थिबो तब कहबा cephalization. And platyhelminthes सेठी आसिला प्रथमे cephalization आसिला, and probably they have evolved due to the creeping habit. Creeping habit ru से माने पिला माने evolve हेचंती. Next, appendages. 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 Appendages पिला माने कौन? The structure arises from the body. The structure आमे जेमिति कहूचे आम बॉडी टाको आमे हेड, नेक, ट्रंक, टेल रे विभक्त करिचे. आमे तो सेठी कहलेनी जे आम बॉडी रे हाथ रहिला, गोड़ रहिला बोली कहलेनी. ता माने हाथ गोड़ कोन ना दे द appendages. टेंटाकिल कोन ना दे द appendages. तेनो legs, hands, all are the appendages. So appendages kono na these are the structure, the projecting structure of the body. The projecting structures, of the body. ता कहबा appendages. आमे जदि आर्थ्रोपोडा पाखकु जिबा सेठी आमे देखिबा ताको कहबा arthros and podos means jointed appendages. तेनो आमर एटा भी पिला माने एटा jointed appendages. एठी joint अछि, एठी joint अछि, एठी joint अछि. So appendages हला main body रू project हेतिबा किछि structure that is called appendages, and that appendages is meant for different purposes, just like your food capturing and for locomotion, and meant for
locomotion, food capturing, etc. This is called appendages. Then segmentation. Next, segmentation. Segmentation पिला माने कौन? Segment माने अंश. When the body is consisting of a number of similar body part, तो कहबा segmented body. And if that type of arrangement occur at the external surface of the body, that is called external segmentation. And if that arrangement present in the internal body part, then it is called internal segmentation. And when the external segmentation correspond to internal segmentation, it is called metameric segmentation. Means segmentation pila mane when the body consisting of a number of similar body parts called metamer or somite or segment then it is called segmented body. And that is two types. One, external segmentation, and second, internal segmentation. External segmentation and internal segmentation. And when the external segmentation correspond to internal segmentation, that is called metameric segmentation. Metameric segmentation. The external segmentation correspond to internal segmentation. The external segmentation correspond to the internal segmentation is called metameric segmentation. Metameric segmentation. That is called metameric segmentation. So, and example tomro pila mane your annelida. Okay. Next. Body temperature पिला मने जीवा body temperature पाखको body temperature को नहीं करी आमे animal मानों को दुई भागरे विभक्त करीचे body temperature को नहीं करी आमे animal मानों को दुई भागरे विभक्त करीचे गोटे हूँ कोल्ड बॉडीड एनिमल ब्लडेड एनिमल और ताकू कहूचे पोइकिलोथर्मस आ गोटे हूँ वार्म ब्लडेड एनिमल और ताकू कहूचे होमियोथर्मस एनिमल
body temperature. One cold-blooded animal or poikilothermos means when the body temperature also fluctuate towards the fluctuating environmental temperature तामाने पिला माने बाहर temperature always fluctuates, always varies. It varies in different seasons of a year. It also varies in different times of a day. So towards that fluctuating temperature of environment, when our body temperature, when the body temperature of the animals also fluctuate, then it is called cold animal or poikilothermos animal. Towards the fluctuating environmental temperature, then it is called cold-blooded animal. किए पिला माने all invertebrates are example है all invertebrates and lower group of vertebrates except lower group of vertebrates. And so they went on hibernation and estivation. One, hibernation, winter sleep, and estivation, the summer sleep. Okay? तेणु सेमाने शीत निद्रा उष्म निद्रा रे जानती कहीं सेमाने रेजिस्ट करि पारंतिनी टुवर्ड्स द फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर. एवं सेकेंड है पिला माने warm blooded animal or homeothermos animal. कौन ना when the body temperature remains fairly the constant irrespective of fluctuating the environmental temperature, when the temperature remains fairly the constant. पिला माने आमे wherever you may go, आमे जदि ले लद्दाख को जीवा जोठी सबु बेले माइनस टेम्परेचर सेठी भी आम बॉडी रो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फारेनहाइट. आमे जदि गोटे डेजर्ट एरिया को जीवा जोठी प्लस 50 डिग्री सेल्सियस सेठी भी आम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फारेनहाइट. तामाने आमे कोठी की भी जाए wherever you may go,
your body temperature remains always the constant, that is 37 degrees Celsius, 98.4 Fahrenheit. Any deviation in the normal temperature causes a disease. So because we are the warm-blooded or homeothermos animal, and we are having one self-regulatory mechanism for that. किए example होचंती पिला माने birds and mammals. That means except birds and mammals, all are the cold-blooded animal. Okay? Then eurythermal and sternothermal. Another two term जो माने wide range of fluctuation को resist करिबे, eurythermal and sternothermal. Those can resist wide range of fluctuation and those can resist narrow range of fluctuation. So this is your body temperature. Next, so पिला माने तापरे आसिला सेक्स को भित्ति करी आमे ऑर्गेनिज्म मानो को दी भागरे विभक्त करिचे, यूनिसेक्सुअल आउ बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल और डायोएसियस, यूनिसेक्सुअल और डायोएसियस कौन ना the individual having either of the sex or two individual possesses two different sex. Male possesses the male sex testis, female possesses the female sex ovary. So that is called unisexual or dioecious. The individual having either of sex, if testis called unisexual male, or if ovary called unisexual female, or dioecious, two different individual possesses two different sex. एका मीनिंग पिला माने आइदर मो पाखरे गोटे सेक्स अच्छी दैट इज यूनिसेक्सुअल, जदि टेस्टिस अच्छी यूनिसेक्सुअल रो मु मेल, जदि ओभारी अच्छी यूनिसेक्सुअल रो मु फीमेल, और टू डिफरेंट इंडिविजुअल, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, टू डिफरेंट इंडिविजुअल possesses two different sex, that is called unisexual or dioecious. Example आमे माने mostly higher animals, higher group ro animals. Second bisexual or monoecious, or hermaphrodite,
पिला माने नुआ शब्द बाइसेक्सुअल मोनोएसियस हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मोनोएसियस हर्माफ्रोडाइट ए सब कौन द इंडिविजुअल पोजेसेस बोथ द सेक्स द इंडिविजुअल possesses both the sex testis and ovary और monoecious single individual possesses both the sex and hermaphrodite half male half female hermaphrodite सेम जिनिस पिला माने एमिति भी अछंती एंटेरो पोस्टेरियर हर्माफ्रोडाइट तमे माने देखिथिबो एमिति भी कैलेंडर अर्धांग ईश्वर अर्धांग पार्वती सेमिति गोटे केही नथाई करी तार परिकल्पना हेनी आमे माने अच्छे ता माने नॉट बट ड्रोसोफिला गोटे फ्रूट फ्लाई ता ना होची हमर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर गोटे बड़ आंब गछरे से माने थांती माने बड़ डांस भलिया तांकर कोन पिला माने अछि एंटीरियर पार्ट मेल पोस्टेरियर पार्ट फीमेल सो ताकू कहबा एंटेरो पोस्टेरियर हर्माफ्रोडाइट किंबा एई पटटा राइट हाफ मेल लेफ्ट हाफ फीमेल ता कहबा बाइलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ बट दिस इज hermaphrodite means same individual possessing both the sex the same individual possessing both the sex किए your hydra your earthworm सेठी पिला माने आउ दुईटा टर्म आसीबो गोटे प्रोटैंड्रस कंडीशन गोटे प्रोटोगाइनस कंडीशन गोटे प्रोटैंड्रस कंडीशन प्रोटैंड्रस प्रोटोगाइनस माने सपोज पिला माने मु गोटे हाइट मो पाखरे टेस्टिस अछि मो पाखरे ओभारी भी अछि ताले मो पाखरे कोन होबा कथा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होबा कथा मोर टेस्टिस रो शुक्राणु मोर ओभारी रो डिंबाणु सहित फ्यूज होबा कथा बट इन सम individual in some bisexual individual like your hydra like your earthworm though both the sex are present in the same individual yet cross fertilization occur at two condition one is protandrous condition pila mane ethi sandhi heichi protos means fast and androecium male part ता माने जो मन को पाखरे मेल पार्ट ता मैच्योर्स अर्लियर देन द फीमेल तब कहबा प्रोटैंड्रस कंडीशन आ गोटे प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रोटोस माने फास्ट एंड गाइनोएसियम फीमेल पार्ट तेणु मो पाखे दीटा जाक पार्ट थिले मध्य टेस्टिस आ ओभारी थरे थरे कौन हुए मोर शुक्राणुटी मैच्योर कला बेलू डिंबाणु मैच्योर कर न थाए और डिंबाणु मैच्योर कला बेलू शुक्राणु मैच्योर कर न थाए सेठी कौन क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर तामाने यूजुअली इन bisexual individual self fertilization should occur but in two condition one protandrous condition and second protogynous condition though two sexes are present but due to they mature at two different time cross fertilization is the rule so this is all about your sex तेणु पिला माने आमे जो प्रत्येक फाइलम रो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िबा
आमे प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स को आग आलोचना करी करी जाउचे तेणु तापरे प्रत्येक फाइलम को खाली सेही कैरेक्टर रे आमे मने रखिबा कौन कौन आमे पढ़िले कैरेक्टर आलोचना कले कहार हैबिटेट कौन हो पारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रे के कौन हो पारंती सिमेट्री कहार कौन सिलोम कहार कौन बॉडी प्लान कहार केमिति बॉडी प्लान किए को जर्म लेयर किए डिप्लोब्लास्टिक किए ट्रिप्लोब्लास्टिक हला एवं कहार सेफालाइजेशन अच्छी ना नहीं कहार सेगमेंटेशन अच्छी ना नहीं एवं तार बॉडी टेम्परेचर कौन तार सेक्स कौन आउ किछि कैरेक्टर पिला माने रहिला आउ गोटिए क्लास रे शेष करदबा तार कार डाइजेशन कौन तार न्यूट्रिस रेस्पिरेशन कौन सर्कुलेशन कौन एक्सक्रीशन कौन रिप्रोडक्शन कौन नर्वस सिस्टम कौन सेंस ऑर्गन कौन डेवलपमेंट कौन इत्यादि इत्यादि सो आज पिला माने एतिकी थाओ आसंता क्लास रे एई एनिमल डाइवर्सिटी को आमे माने सारिबा थैंक यू ऑल।